Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss another very important organelle that we have started in the previous lecture, that was lysosome. So we are going to complete this today. So let's move to the whiteboard. So lysosomes or the suicidal bags single membrane bounded organelle. और डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में कुछ हमने बेसिक जो इसके हवाले से डिस्कशन की थी और कुछ चीज़ें जो रिमेनिंग हैं वो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ थी जो कि लाइसोसोम से रेलेवेंट थी, तो उनको एक दफ़ा हम देख लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं इनके फंक्शंस पे और इसकी डिजीज़ के ऊपर। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइमरी लाइसोसोम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया था कि द गोल्जी वेसिकल विच कंटेन्स द हाइड्रोलिटिक लाइसोसोमल एंजाइम्स इज टर्म्ड एज द प्राइमरी लाइसोसोम। The Golgi vesicle that contains lysosomal enzymes like the acid phosphatases and hydrolytic enzymes. और प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 40 डिफरेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जिनको हम हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। सो द गोल्जी वेसिकल दैट कंटेन्स लाइसोसोमल एंजाइम्स is called primary lysosome. Clear? Now, the secondary lysosome. Which is also called as the phagolysosome. The primary lysosome plus the food vacuole. The food vacuole, which is also called as phagosome, is called secondary lysosome. Means कि जैसे ही फूड वैक्यूल सेल के अंदर आया एंडोसाइटोसिस के जरिए, तो क्या होगा, जो प्राइमरी लाइसोसोम वो उसके साथ अटैच हो जाएगा और उसको एक ही वैक्यूल के अंदर हो लेंगे। क्लियर? सो दैट वेरी कंडीशन और दैट वेरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द प्राइमरी लाइसोसोम प्लस द फूड वैक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी लाइसोसोम. नाउ देयर इज थर्ड टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू दिस लाइसोसोम, दैट इज ऑटोफैगोसोम. तो इन तीनों के अंदर डिफरेंस आपका बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. द प्राइमरी लाइसोसोम, तो डियर स्टूडेंट्स ये अहम चीज़ आपको बताने लगा कि आपने जहन में रखना है कि जो ऑटोफैगोसोम है ये एक्चुअली है क्या. दैट इज बेसिकली द प्राइमरी लाइसोसोम. ये चीज़ आपने एमसीक्यूज पॉइंट है उसे जहन में ज़रूर रखनी है. द प्राइमरी लाइसोसोम
that eats or digest the worn out parts of a cell is called autophagosome, and this phenomena in which the lysosome eats the parts of its own cell is called autophagy. Clear? The primary lysosome that eats or digests the worn out parts of a cell is called autophagosome. And this phenomena in which the lysosome eats or digests its own organelles, the worn out organelles, that is called as autophagy. Clear? तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से. Clear? Now, dear students, its functions. Functions of lysosomes. So, number one, the lysosomes digest the phagocytosed food particles. Number two, the lysosomes are involved in killing the germs like viruses, bacteria. Clear? तो जैसे ही वो सेल के अंदर एंट्री करेंगे तो लाइसोसोम्स फौरी तौर पर उसको अप्रोच करेंगे और उनको किल कर देंगे. सो सेकंड फंक्शन. नंबर थ्री, दैट इज द derivation or derivation of energy from its own parts during the starvation. Clear? ये ऐसा पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स जिसने साइंस की फील्ड में तहलका मचा दिया जब इसकी डिस्कवरी के हवाले से कि जब भी हमारी बॉडी स्टारवेशन से सफ़र कर रही होती है, मीन्स आपकी बॉडी को एक लंबे गैप के लिए कुछ खाने पीने को नहीं मिला, उसका जो क्रिटिकल लेवल था, जो थ्रेशोल्ड लेवल था, जो स्टोर्ड इसमें न्यूट्रिएंट्स से वो भी ख़त्म हो चुके हैं. तो अब एनर्जी कैसे हासिल की जाएगी? तो वो क्या किया जाता है कि जो इसके अपने पुराने पार्ट होते हैं, जो रिपेयरेबल पार्ट होते हैं, जो सही तरह से भी परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उनको ही डाइजेस्ट करके और उनसे एनर्जी डिराइव की जाती है. क्लियर? अनदर फंक्शन दैट इज द कन्वर्शन ऑफ stored materials like glycogen into glucose for energy. क्लियर? तो एक तो एनर्जी इस तरह से हासिल की जा रही है जो पुराने पार्ट्स हैं उनको डाइजेस्ट करके, और एक जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे ग्लाइकोजन वगैरह या कुछ फैटी एसिड्स वगैरह, ठीक है, तो उनको कन्वर्ट किया जाता है. पहले अगर लिपिड्स हैं तो उनको पहले कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उससे एनर्जी, उनकी ऑक्सीडेशन से एनर्जी हासिल की जाएगी. इसी तरह से अगर स्टोर्ड लाइक ग्लाइकोजन हमने पढ़ा था, तो पॉलीसैकेराइड विच इज स्टोर्ड
इन द लिवर एंड द मसल सेल्स, तो उनको मोबिलाइज, उनके सेल्स में इनकी मोबिलाइजेशन की जाएगी, कन्वर्शन की जाएगी इनटू ग्लूकोज, और फिर जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी तो उससे एनर्जी हासिल होगी। ये सारी जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स, उसमें इंशाल्लाह डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? इसी तरह से इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल प्रोसेसेस like in tadpole। tadpole आपको पता है कि जो फ्रॉग होता है जिसकी टेल होती है, the frog that contains the tail, so that is tadpole। लेकिन जो एडल्ट फ्रॉग आप देखते हैं उसमें इसकी टेल नहीं होती, वो रिमूव कर दी जाती है। ठीक है, सो ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस लाइक इन टैडपोल द टेल इज रिमूव्ड बाय द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स। क्लियर? उसकी मदद से वो रिमूव कर दी जाती है। इसी तरह से अगर हम ह्यूमंस की बात करें, when the baby is in the womb of the mother, तो हमारे जो ये डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स, इनके दरमियान में स्किन होती है, वेब होता है। जैसे आपने देखा वो डक्स के यहाँ पर वो उनके स्विम करने के लिए, तो यहाँ पर वो स्किन, इंटर डिजिटल स्किन होती है। तो इंसानों के अंदर भी इसी तरह जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो तब उसके भी इनके जो डिजिट्स होते हैं इनके दरमियान में स्किन होती है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो ये सारी डिजिट्स फ्री होती हैं, फ्यूज नहीं होती हैं, इनके दरमियान में कोई स्किन नहीं होती है। तो वहाँ पर भी हियर इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व the lysosomes। Clear? Now, dear students, we will move towards the diseases. The diseases which are related to lysosomes, which are called as the storage disease. As the lysosomes, it consists of or it contains a number of hydrolytic or strong digestive enzymes। तो अगर कोई भी एंजाइम एब्सेंट हो जाए, उनकी कुछ लिस्ट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में शेयर की थी कि कौन कौन से उसमें एंजाइम्स हो सकते हैं, जैसे प्रोटियाजेस हैं, लाइपेजेस हैं, उसमें न्यूक्लियसेस हैं, फॉस्फेटेजेस हैं। तो ये एंजाइम्स इसी तरह के तकरीबन 40 के करीब, अप्रॉक्सीमेटली 40 डिफरेंट हाइड्रोलाइसिस, जिनको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं, अगर वो मिसिंग हो जेनेटिकली, उनका जीन्स मौजूद ना हो या उनमें म्यूटेशन हो जाए, तो फिर उनकी वजह से क्या होता है कि इट लीड्स टू द स्टोरेज डिजीज। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्जेनिटल डिजीज। कॉन्जेनिटल कहते हैं दैट इज जेनेटिक, ठीक है, दैट रन्स इन द फैमिलीज। ठीक है, the congenital disease caused by the absence or mutation in one of the hydrolytic lysosomal enzymes, leading to the storage of materials, for example, the glycogen or lipids, etc., in the cells, thus hindering the cells in their normal functioning, or which is also called as normal physiology or physiology। ठीक है, सो इस तरह के डिजीज़ को हम कहते हैं स्टोरेज डिजीज़। जो भी इनमें से जो डिफरेंट हमने बात की एंजाइम्स हैं जो कि लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद हैं, उनमें से कोई भी एक जो म्यूटेट हो जाए, जिसमें म्यूटेशन हो जाए,
या फिर वो कॉन्जेनिटली एब्सेंट हो, वो उसका जीन ही ना मौजूद हो, जो सेल के अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स यानी डीएनए के ऊपर उसका जीन ही नहीं है, तो वो प्रोटीन नहीं बनेगी। वो प्रोटीन नहीं बनेगी तो वो रिलेटेड जो मटेरियल है वो क्या होगा, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, उसकी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा, तो क्या होगा, वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो सेल एक फिजिकल एंटिटी है, उसके अंदर हर चीज़ को स्टोर करने की एक क्रिटिकल लिमिट है। तो जब उसकी क्रिटिकल लिमिट से क्रॉस कर जाएंगी चीज़ें, मतलब कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें स्टोर होना शुरू हो जाएंगी, जो कि नॉर्मली क्या होता था, एंजाइम्स की मदद से वो डाइजेस्ट कर दी जाती थी, मोबिलाइज करवा दी जाती थी, अगर ना होंगी तो सेल के अंदर जमा होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से सेल की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसके अंदर इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे, और उसी की वजह से फिर डिजीज कंडीशन बनना शुरू हो जाएगी। क्लियर? सो दैट काइंड ऑफ डिजीजेस आर कॉल्ड एज स्टोरेज डिजीज, एंड approximately there are approximately 20 such storage diseases caused due to absence or mutation in one of the lysosomal enzymes. क्लियर? कितनी डिजीजेस नोन है फिलहाल? 20 डिजीजेस, दैट इज एन एमसीक्यू। स्टोरेज डिजीज जिनको कहा जाता है, उनमें से चंद एक के नाम मैं यहां पर लिख देता हूं, और इनमें से दो जो हैं वो डिस्कस हुई हैं हमारी बुक के अंदर, लाइक Fabry's disease, like Tay-Sachs disease, like glycogenosis type 2 disease. Clear? और इसी तरह से dear students, there are the Hunter's disease, इसी तरह से बहुत एक लंबी लिस्ट है तकरीबन 20 डिजीज की, लेकिन हमारी बुक के अंदर जो डिस्कस हुई हैं उनमें से एक तो है टे-शैक डिजीज और दूसरी है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस टू डिजीज, व्हाट आर दे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्लाइकोजिनोसिस, टाइप 2। क्लियर? सो टाइप 2 है, इसका मतलब है टाइप 1 भी होगी, और इसका मतलब है टाइप 3 भी हो सकती है। तो टाइप 2 तो हम तभी कहते हैं जब इससे पहले 1 हो, तो इसका मतलब ये भी है, तो इस 2 के बाद 3 भी हो सकती है। सो दैट इज क्वाइट एग्जैक्टली राइट। तो टाइप 1 भी है ग्लाइकोजिनोसिस, टाइप 2 भी है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइप 3 भी है इसी तरह से, लेकिन जो टाइप 2 है दैट इज बेसिकली विच इज डिस्कस्ड इन आवर बुक, दैट इज ग्लाइकोजिनोसिस। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट मैंने देखा है, अक्सर स्टूडेंट जो कि सही तरह से, जिस तरह से लेक्चर सुनना चाहिए, नोट करना चाहिए, वैसे नहीं कर रहे होते, तो वो ये गलती करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स को मैंने ये गलती करते हुए देखा, और मैं बता भी रहा हूं उसके बावजूद गलती करते हैं। वो मिस्टेक क्या है? वो यहां पर ग्लाइकोजिनोसिस की बजाय लिख देते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। सिर्फ एक ई का अल्फाबेट का फर्क है। डियर स्टूडेंट्स, ग्लाइकोजिनोसिस दैट इज अ स्टोरेज डिजीज, जबकि ग्लाइकोजेनेसिस ये दैट इज द नॉर्मल प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। अगर आप इसको ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 लिखेंगे, सो टेक्निकली इट इज रॉन्ग, टेक्निकली इट इज रॉन्ग। तो असल में आपने ये ग्लाइकोजेनेसिस नहीं लिखना, it is glycogenosis, that is correct. O is correct. Clear? So what happens in glycogenosis type 2? So the glycogen आपने पढ़ा था, that is called as the animal starch. It is animal starch gets stored in the liver
and muscle cells abnormally, क्योंकि नॉर्मली भी इसके अंदर स्टोर होती हैं, आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। तो नॉर्मली ग्लाइकोजन स्टोर होती है लिवर, लेकिन यहां पर एबनॉर्मल अमाउंट्स में जमा होना शुरू हो जाएगी, स्टोर हो जाना शुरू हो जाएंगी बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम, दैट इज अल्फा glucosidase, that is enzyme responsible for the conversion of glycogen into glucose. तो जब ये कन्वर्शन ही नहीं हो पाएगी, ग्लाइकोजन स्टोर ही होती चली रहेगी, तो इससे क्या होगा, अंदर स्पेस के इश्यूज आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो सेल्स है दे विल नेवर परफॉर्म इन नॉर्मल फैशन, ठीक है। तो मसल्स जो होते हैं इनमें फिर डिजीज जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। ये बेसिकली मसल से रेलेवेंट डिजीज है, क्लियर। इसी तरह से एक और डिजीज जो कि डिस्कस हुई है, दैट इज टे-शैक्स डिजीज। टे-शैक्स disease. So this disease is related to lipid metabolism. ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, ये लिपिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। So in Tay-Sachs disease, the enzyme responsible for lipid hydrolysis is absent or mutated, leading to excess accumulation of lipids in the nervous system. तो नर्वस सिस्टम के अंदर वो एबनॉर्मली वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, लिपिड्स चूंकि हाइड्रोलाइज नहीं हो पा रही, ठीक। सो दिस लीड्स टू मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं कि अपने ही एज के बच्चे जो होते हैं, अपनी हम उम्र बच्चे, उनके हिसाब से उनकी जो दिमागी कैफियत होती है, मतलब जो एबिलिटी होती है, उनका आईक्यू लेवल वो उसके साथ मैच नहीं कर पा रहा होगा, वो उनसे आईक्यू लेवल में थोड़ा पीछे होंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज मेंटली रिटार्डेड। वो जैसे कि 3 साल के बच्चे जो एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, नॉर्मली अगर डिजीज से कोई बच्चा इससे सफ़र कर रहा है, टे-शैक्स डिजीज से, चूँकि ये कॉन्जेनिटल डिजीजेस हैं तो ये बचपन से ही होंगी, तो बच्चा जो है उसकी जो मेंटल ग्रोथ है, यानी उसकी जो ब्रेन की जो ग्रोथ है वो सही तरह से नहीं हो पाएगी। द रीज़न इज द एक्सेस accumulation or storage of lipids within the cells of the nervous system. Cells कौन से होते हैं nervous system के? Especially the neurons, clear? जिन्होंने conduction करनी होती है, which are related in the normal control programs of the body. And eventually, अगर इसको मज़ीद इसके कोई मैनेजमेंट ना की जाए, and eventually it leads to death. Clear? तो इस तरह से ये डिजीज जो है ये खतरनाक हो सकती है. So these are 2 storage disease which has been discussed in our topic. तो ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है. अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ये लाइसोसोम्स नहीं पूछा जा रहा तो ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2, Tay-Sachs disease, short question. What are storage disease? Short question. Differentiate between primary and secondary lysosome. Short question. What is autophagosome? That is also short question. Write on the functions of lysosome. Also short question. Clear? Define lysosomes. So in the last, मैंने previous lecture में भी लिखा, इस lecture में भी लिखा, the lysosomes as suicidal bags. So आप सोच रहे होंगे why they are called as suicidal. Suicide समझते हैं, खुदकुश. So single membrane bonded तो हैं ही, लेकिन खुदकुश हैं. Like this. This is a lysosome. It contains a lot of hydrolytic enzymes.
तो इसको सुइसाइडल बैग क्यों कहते हैं? इफ़ इट गेट्स रप्चर्ड, इसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए सेल के अंदर ही, सो एज इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करेंगे, वो सेल की जो प्रोटीन्स हैं, जो न्यूक्लियसेस हैं, जो फॉस्फेटेसेस हैं, जो उसकी कार्बोहाइड्रेट, सब की तबाही फैलना शुरू कर देंगे. सो इट विल एक्ट एज अ सुइसाइड. क्लियर? यानी सेल का अपना ही हिस्सा है और वो अपने ही सेल को किल कर रहा है. सो दैट इज व्हाई द ब्रोकन membrained lysosome is called as the suicidal bag. इस वजह से इससे आमतौर पर जब इंजरी होती है, जब एक ट्रॉमेटिक इंजरी होती है, तो लाइसोसोम्स व्हेन दे गेट रप्चर्ड, तो सेल के अंदर ये फट जाते हैं, तो अपने सेल को भी नुकसान पहुंचाते हैं और साथ के आसपास वाले सेल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं. आपने एक टर्म पढ़ी होगी मैट्रिक के अंदर, दैट इज एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस. तो नेक्रोसिस आपने पढ़ा था, जो एक्सीडेंटल या डिजीज कंडीशन में होता है, जिसमें मटेरियल पैक नहीं हो पाता और जो कॉन्टेंट्स होते हैं सेल के वो बिखर जाते हैं और उसमें मौजूद ये लाइसोसोम्स भी बिखर जाते हैं, जिसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान होता है, ना सिर्फ उस सेल को बल्कि उसके आसपास वाले सेल्स को भी. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल दैट इज पेरोक्सिसोम्स. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.